बड़ी स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस है। आज चैप्टर 1 है जो रिवीजन चैप्टर है आपका। आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं आज आपको वापस रिवीजन कराऊंगी फर्स्ट चैप्टर से जो आपको करना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड एंड यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज. Nutrition, a process of taking food by organism and its utilization in the body is called nutrition. There are two main types of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, organisms make their food by themselves from simple substance, is called autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, animals and most other organisms take ready-made food from other organisms, is called heterotrophic nutrition. A process of synthesis of food occurring in the leaves of plants is called photosynthesis. For the process of photosynthesis, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water are essential. Other modes of nutrition in plants: plastic nutrition, insectivorous nutrition and sprophytic nutrition. Cascada is a parasite plant. Nepenthes is an insectivorous plant, and mushroom and other fungi are saprophytic plants. Symbiosis. Some organisms live together and share shelter and nutrients. This kind of interrelations is called symbiosis. Lichen is a symbiotic relation of algae and fungus. The fungus provides shelter, water and minerals to the and in return algae provides food which is prepared by photosynthesis. Both benefits in their symbiotic relation. Pulses such as gram, peas, bean, moong, etc. are plants of legume family. Rhizobium bacteria inhabit in their roots. Rhizobium bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. Thus, it provides nitrogen supply to leguminous plants. In return, leguminous plants provide food and shelter to rhizobium bacteria. Thus, the relation in between leguminous plant and rhizobium bacteria, also called symbiotic relationship. This relation is of great significance for the farmers. Question 1 है, why do organisms take food? आंसर आएगा, ऑर्गेनिज्म टेक फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. नंबर 1 टू बिल्ड देयर बॉडीज. नंबर 2 फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. 3 टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ बॉडीज. नंबर 4 प्रोवाइड द एनर्जी टू कैर out life processes. And number 4 to maintain healthy and disease free body. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ. नंबर पैरासाइट का नंबर 1 है, पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेप्रोट्रोफ obtains is nutrition from dead and decaying matter. Number 2, a parasite absorbs ready-made food from host and no need to secrete digestive juices. Number 2, सेप्रोट्रॉफ का in secretes digestive juices on dead matter, convert it into solution and then absorb it. Number 3, parasite का Cascada is a parasite plant. Number 3, majority of fungi are saprotroph. Next question है, how would you taste the presence of starch in leaves? The presence of starch in leaves can be tasted by the following method. Number 1, pluck one green leaf from a plant
growing under sunlight. Number 2, keep it in a beaker containing boiling water for 5-6 minutes. Remove the lid from the boiling water and place it in a test tube containing enough alcohol. Place the test tube. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी. 3, in boiling water for some time the green color of the leaf will be removed. Next, number 3 point, now wash it with pure water. Number 4, put 1-2 drop of iodine solution on the leaf and check its color. Number 5, color of leaf turns black or blue. It indicates the presence of starch in the leaf. Number 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. The leaves of green plants have green pigment called chlorophyll. It helps leaves to absorb the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Thus, green plants synthesize food in form of carbon dioxide with the help of carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight. This process is called photosynthesis. And equation of photosynthesis process can be represented as following. यहाँ पे आपको ये करके बताना है. Next, fill in the green plants are called blank since they synthesis their own food autotrophs. Number 2, the food synthesis by the plants is stored as blank. तो आएगा starch. Blank पे लिखना है starch. Number 3, in photosynthesis solar energy is absorbed by the pigment called blank. आंसर आएगा chlorophyll. Blank में लिखना है chlorophyll. Number 4, during photosynthesis plants take in blank and release blank gas. तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस आएगा. Next, name the following. Number 1, a parasitic plant with yellow slender and branch stem, तो कसकटा आएगा. Number 2, a plant that it is partially autotrophic, तो आंसर आएगा Nepenthes. Next, number 3, the pores through which leaves exchange gases, तो आंसर आएगा stomata. Next, the plant which traps and feeds on insect is ऑप्शन है कसकटा, बी चाइना रोज, सी पिक्चर प्लांट, डी रोज. तो आंसर आएगा सॉरी इसका एक आपका टिक द करेक्ट आंसर है क्या, वो वापस करवा देते. नंबर 1, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ A autograph, B saprotrophs, D parasite and D host. आंसर आएगा B parasite. Number 2, the plant which traps and feeds on insects is A कसकटा, B China rose, C pitcher plant and D rose. आंसर आएगा pitcher plant. मैच द फॉलोइंग है 1 का और 2 का. आपको पहले ऑप्शन बताती हूँ. नंबर 1 के कॉलम के नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 कसकटा, नंबर 4 एनिमल्स एंड नंबर 5 इंसेक्ट्स. बी के ऑप्शन हैं रिजोबियम, हेट्रोट्रोप्स, पिक्चर प्लांट, डी लीफ एंड ई पैरासाइट. अभी नंबर 1 क्लोरोफिल का आएगा आंसर डी लीफ. नंबर 2 नाइट्रोजन ए रिजोबियम. नंबर 2 कसकटा. 3 का आएगा ई पैरासाइट. नंबर 4 एनिमल्स, आंसर आएगा बी heterotrophs एंड नंबर 5 इंसेक्ट्स का आएगा सी पिक्चर प्लांट. अभी नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आंसर आएगा फॉल्स. प्लांट्स इज सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, आंसर आएगा फॉल्स. नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रू. Number 4, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis, आंसर आएगा ट्रू. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम
एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ए रूट हेयर, बी स्टोमेटा, सी लीफ वेन्स एंड डी पेटल्स। आंसर आएगा बी स्टोमेटा। Number 12, choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their roots, stems, flower, the leaves. Answer आएगा the leaves. Next, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are their advantages to the farmers? Answer आएगा farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses because greenhouses protect them from high blowing wind and rodents. They also protect the plants inside it from the climatic conditions outside. Also, the greenhouse gives the crop suitable temperature for growth. Advantage to the farmers: growing seasons or plant can be extended even the cold climate. Farmers can grow a wide variety of plants. To grow plants without use of dangerous toxic pesticides. And next point है प्रोडक्शन एनहांसेस। ये आपका क्या हो गया? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाऊंगी जो आपको करने होंगे, ठीक है। ये आपको क्लासों की बुक में होमवर्क लिखना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू।